Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm explaining two major reproductive strategies in ecology, which is Semelparity and Iteroparity. तो सबसे पहले बात करें Semelparity की. So in Semelparity, organism reproduce only once in its lifetime. It channels almost all its stored energy into a single massive reproductive event and then dies soon. This is often seen in environment where the chances of surviving to reproduce again is very low, or where producing is huge number of they producing a huge number of offspring at once, which increase the probability that at least some will survive. So the favor this is favored in unpredictable and harsh environment. So the example is salmon, bamboo, century plant, many insects. It means कि ये ज़्यादातर फिशेस में देखने को मिलता है. तो फिश में क्या होता है कि वो एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, फिर वो उनकी डेथ हो जाएगी. उसके बाद ही जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. अब एटरोपैरिटी की बात करें तो एटरोपैरिटी क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट इट्स लाइफ. ओके, सो instead of investing everything in one event, it spread out its reproductive effort across season or years. This is useful in more stable environment where surviving long enough to reproduce again is likely possible. Means it happens in mostly stable environment where long term survival is possible. They maintain their bodies, survive and reproduce repeatedly. The examples are humans, birds, perennial plants and most of the mammals. इट मीन्स कि इसमें जो जो भी एनिमल्स हैं ये मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक ही बार वो सारी एनर्जी अपना वेस्ट नहीं करते, ये कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं. तो ये मोस्टली स्टेबल कंडीशंस में होता है. इसको बोलते हैं एटरोपैरिटी. अब नेक्स्ट है इकोलॉजिकल आइडिया. So, the key contrast is the trade-off between survival and reproductive investment. So, Semelparous species choose one high investment event, while Iteroparous species choose repeated and lower investment event. Both strategies are successful, but they work in different ecological context. So now, ecological idea, both strategy reflect life history trade-off between survival growth and reproductive investment, whatever that I have said before. So here is a comparison table. Left side, here are features, and rightmost are Semelparity and Iteroparity characteristics. तो सबसे पहले है कि नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट. तो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट सेमेल्पैरिटी में एक बार होगा, एटरोपैरिटी में मल्टीपल टाइम्स होते हैं. एनर्जी इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई इन वन इवेंट, whereas in iteroparity spread over many events. Survival after reproduction is they usually die. In semelparity, the organism usually die, but in iteroparity they survives. Based environment are unpredictable and high risk in semelparity, whereas environment is stable and predictable in iteroparity. Offspring output is very high in one burst in semelparity, because there are many offsprings are produced in one time.
means a large number of offsprings are produced. बट इन इटरोपैरिटी मॉडरेट इवेंट होगा, क्योंकि उसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो कम नंबर में बने रहे। इसके एग्जांपल होते हैं सेमलपैरिटी के सैल्मन, बैम्बू, मेफ्लाइज, और एट्रोपैरिटी के होते हैं ह्यूमन, बर्ड्स, पेरेनियल प्लांट्स, जो कि साल में एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे। अब तो सेमलपैरिटी और इटरोपैरिटी दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये CSIR में पूछते हैं, इससे क्वेश्चन आता है जनरली। सो इफ़ यू वांट आई कैन एक्सटेंड दिस इनटू लॉन्गर लेक्चर एंड ऐड सम मोर एग्जांपल डायग्राम. So that's it for this question and this video.